Hello guys, welcome back to our channel. My name is Abhay Chwanbhai. Anandita. So today we are going to give our reaction on official trailer of Jannayagan. Yes, and this is Thalapathy Vijay's movie, and we are super Yes. excited. This is probably the last movie of his Yes. career. That is a little bit of sad part, but no more talks about Let's sad see thing and all. one last time. Let's see the official trailer now, and this is going to be bang on. Okay, so Yes. let's get started. But उससे पहले if you're new to this channel, guys, please do subscribe us and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. एक चाचा एक नाम भेजा है, कौन है ये जरा पता करके बताओ। हाथ तो नहीं लगाया ना। तूने बड़े बड़े क्रिमिनल्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन उन क्रिमिनल्स का किंग कौन है पता है? Cool stuff, I can feel it. लोग उसे बुलाते हैं थलपति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा। तुमने इतने लोग को अकेले मारा, क्या तुम सुपरमैन हो? मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ लोग उसे सुपर ही बोलते हैं। बेटियों पे डर हावी नहीं होना चाहिए। बीजी को हमें एक शेरनी की तरह बनाना है। कम ऑन, डू इट। कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना। तुम लोगों को किसने भेजा है? Come, let's play a game. Oh man, आज सिटीज दिन बाद he's इंडिया looking मेरे killing, कदमों में killing होगा। man, killing. Oh, he is a villain. ओए, Okay. तबाही। Political angle also. is also there. मुझे आर्मी में नहीं जाना, डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे हैं चाचा। बीजी के इस डर के पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर हमें उसका पता लग गया, देश के ऊपर आने वाला खतरा भी हम टाल सकते हैं। लोगों की भलाई के लिए मेरे काम में टांग मत अड़ाना। तू बस खुद को बचा और वहां से निकल। हाँ? He's youth man here. What मेरे man? खिलाफ सारे गुंडे मवाली एक तरफ खड़े हैं, लेकिन जीत उनकी नहीं होगी। तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दफा हो जा। अगर हमने उसे अभी मारा तो वो भगवान बन जाएगा। उसे ऐसे सलीब पे लटकाना है जहाँ से वो जिंदा नहीं आ पाएगा। तुझे खत्म करूंगा, तेरी बेइज्जती करूंगा, ऐसा बोलने वाले तो मैंने बहुत देखे। वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। I am coming। Epic dialogue. तुम भलाई करने के लिए पॉलिटिक्स में आया था ना कि स्कैम करने के लिए, करप्शन के लिए। पॉलिटिक्स करेगा। Rise together. Yes. Jan Okay, Jan 09. 09, Okay, so okay. you have to be in the theater only, Of course. not in your home on that day. Full okay? masala So movie. I can feel this. watch and whatever full time you want. entertaining Full it will be there. entertaining, and this is having this politics angle. This is having this clash between the enemy and the hero, and also this is having a great, I think, power pack story also as well. Of course. मतलब एक छोटी बच्ची को वो बड़ी कर रही है, बड़े राइट? कर रहे उनकी हैं। डॉटर, एंड उनका शौक है कि वो आर्मी में जाए, उसके बाद Correct. थोड़ा ऑब्स्टेकल्स आएगा, फिर कैसे वो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं एंड कैसे वो मुश्किल से निकलते हैं। एंड बॉबी देओल सर का क्या अपीयरेंस दिखाया गाइस, मतलब बूस्ट अप उधर ही हो गया मुझे लग रहा है। परफेक्ट फॉर द विलन। हाँ, विलेन रोल के लिए ही एंड संजय दत्त सर, अभी वो लोग ये दोनों ही रूल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मूवी इंडस्ट्री, whole Indian movie industry, people are every people are taking these two people only for as a villain role. I think Bobby Deol sir का जो appearance था, मतलब goosebumps दे रहा था मुझे, the way he was coming and killing the goons and everything. And So Thalapathy Vijay sir, he was not looking was not that looking, हाँ. old, right? He was just looking around 30-35 years. 35 right? years only, yes. Seriously, Younger than he us. was lean and serious. The So sad fit part also. is that at this point of his career, he is living
movie, man. This is going to be a sad thing for all the film industry people and also as well as the followers like us, right? But definitely this Jananayagan will be the super duper blockbuster hit. Like it should break all the records, Right. so that people can talk about that कि उनका last movie जो गया था वो तो मतलब एक था, मतलब masterpiece बन के गया. Right. It has we crashed always all the have box that, office records. हाँ, correct. We always have that gratitude towards him that this is maybe his last movie, but definitely like who knows, he can come back, he can give a grand comeback, right? And we will be super duper extremely like next to the level. I think that is the happy. expectation coming from each and every fan. Actually. Right? But I don't know, right? Nobody Yeah. knows. And जो म्यूजिक चल रहा था, BGM क्या चल रहा था, मतलब पूरा he is shaking. going to bang it. Yeah. Right? And the theater will, I think, burst It will here burst. and there. It will burst, right? Like anything. Right. So yes, definitely 9th January को ये movie release होने वाली है. As I have told, please go and watch this movie out with your family, with your friends, and just make this movie super duper blockbuster hit, so that this can be a remarkable thing. Throughout the life of everybody. So Abhay and me also are planning to go and watch this movie out, and definitely we have a plan to give the review or the reaction. Yes, of Review course. mainly, and short vlog also if possible, because you guys love to watch us, right? That we are spending our life, how we are doing and everything. Yes. So yes, this is Thalapathy Vijay sir's thing, so we will love to do this. Okay, so yes, that is it for today's video. I hope you have enjoyed our reaction. If you do so, please don't forget to subscribe, guys, and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, Bye.